Hello students, this is the third video lecture of chapter 10 Living Organisms and Their Surrounding, class 6th Science. In this video lecture, we are going to start with the topic adaptations. Okay, so before moving down to what is adaptations and what are the examples for each habitat, let us first recall few topics which we have discussed in earlier video lectures. So till now, just before this, before this video lecture, second video lecture contains, the interaction of abiotic components with biotic components. Okay, so we looked into that topic. We started with habitat. We understand what habitat is, and we also talked about types of habitats. So basically, there were two types of habitat: aquatic, or you can say water habitats, and terrestrial habitat, or you can say land habitat. So that we have discussed. Furthermore, aquatic habitat is divided into 3, terrestrial is divided into 6. So what are those? What are the examples of each subtypes of habitats that we have already discussed in second video lecture. In this video lecture, we would be focusing on adaptations. What do you understand by adaptations? Basically, when you hear the term adaptations, we have already discussed in, first as well as in second video lecture a bit regarding this. Probably in first video lecture, wherein there was a statement where, it says something, it goes something like this, that animals adapt themselves to survive in a particular environment. I'm not saying exactly, but the total conclusion for of that statement was kind of same, which said that animals adapt themselves to survive in the particular environment, habitat, or in the place where they are living. Okay, basically we can refer adaptations with features. We can refer adaptations with features. Now what are those features? These features are possessed by the organisms. Okay, these are few characteristics which an organism either develops or modifies its body parts or anything. Okay, any feature or characteristic which modification takes place in that any particular part of that body, okay, of particular organism obviously. So organism has such a feature that helps it to survive in a particular habitat. For example, when I say camel, okay, this is a basic example, and I know I am taking a lot of time this example only because this is a basic example. Whenever I, in the second video lecture also I made you imagine that when I ask or when I say camel, the first thing that comes in your mind is what? Desert. Obviously, you cannot think desert without camel or camel without desert. So camel is living, or the habitat of camel is desert. Okay, now to survive in such a hot condition of desert with scarcity, what do we understand by the term scarcity? Lack of water. With the lack of water, with such a high temperature, how is camel able to survive? So camel has made certain modifications, and not only camel but the cactus. Cactus is also, basically you can, relate cactus with desert. So how cactus has modified its body parts, or its structure, or its way of functioning with the environment, that modifications, that characteristics possessed by them, so that they can comfortably live in that environment. है ना कि भाई वो आराम से whichever habitat they possess. For example, when I say polar bear, obviously it would be polar habitat or tundra habitat. Yes, so that means the area where always it is covered with snow. The area which is always covered with snow, there the polar bears are found. Now how they have modified themselves to live in that. So today we are going to take two habitats. First
habitats. Okay, and the second habitat is water habitats, or you can say aquatic habitats. Okay, so we would be studying about adaptations for these habitats. How organisms living in these habitats, that is the camel, not only animals but also including plants. When I say organisms, that means both plants and animals are involved. Okay, in case if I am talking about particular habitat, we would be including both, as I said, plant as well as animal. So plants are also included. What features are they having to live in that particular habitat, that we would be discussing one by one. So once again, when I say adaptation, what do we understand by adaptation? These are the features that help organisms and the features which are possessed by that particular organism. So the features that help organism to survive in a particular type of habitat. Okay, so whatever, if you feel like to talk about, for example, deer. Okay, what first thing comes in your mind? Something kind of forest. Okay, and forest basically, we discussed, in the previous class, that in which category would you be placing deer? In grassland habitat, or in rainforest habitat, or in polar habitat? Obviously it won't be, but there you might be having confusion that how where deer is found, in grassland habitat or in rainforest habitat. So for this you have to watch the second video lecture, make your concepts clear, and now we are going to start with what? Adaptations. Okay, so as I was discussing, that the features that help organism to survive in a particular type of habitat. In that, taking this into consideration, let us first talk with adaptations for desert habitats. Okay, so when I say desert habitats, okay, what are the conditions in desert? So that is that desert habitat has high temperature and scarcity of water, as I discussed. So to cope with these extreme conditions, what features do plants have so that it makes them easy to live with this condition? भाई इतना टेम्परेचर होने के बावजूद, पानी की कमी होने के बावजूद, how these plants are able to survive? Okay, what are the features that help them to survive in these conditions? Features are long roots, succulent plants. So I won't be, you would be thinking that in textbook the statements are so long given, and we have to remember one. That is not the thing. You have to just remember the key terms. They have provided, for example, let us take the first feature of that plants which are living in desert habitat. So plants which are living in desert habitat, they have to cope up with the high temperature, and they also have to cope up with the scarcity of water. कि भैया पानी की कमी है तो उससे कैसे बचे, तो उसके लिए they have long roots. अब long roots क्यों होंगे? सोचो जरा, अगर long roots है मतलब that roots would be penetrating deep and deep into soil, so that the search of water becomes easy. अगर roots छोटी होगी तो जो एरिया होगा जिसमें वो स्प्रेड करेंगी वो छोटा हो जाएगा. जितनी लंबी रूट्स उतना ज्यादा वो दूर जा पाएगी या उतना ज्यादा डीप में जा पाएगी सॉइल के इन सर्च ऑफ वाटर एंड अल्टीमेटली गेट्स वाटर. सो लॉन्ग रूट्स हेल्प टू कोप अप विद दिस कंडीशन, दैट इज स्केर्सिटी ऑफ वाटर. पानी की कमी को कैसे कोप अप करते हैं ये प्लांट्स? तो उनके पास लॉन्ग रूट्स है. ये लॉन्ग रूट्स क्या करती हैं? दे helps or they helps the plant to make water collect from deep into the soil. अगर soil में अंदर पानी है वहां तक roots penetrate कर सकती हैं
यानी जा सकती हैं अंदर तक, डीप इन द सॉइल बिकॉज दे आर लॉन्ग ऑब्वियसली. सो द एरिया ऑफ एक्सपेंशन इंक्रीजेस. रूट का एक्सपैंडेड एरिया जो है ना फैल जाती है, तो वाटर मिलने का चांसेस भी बढ़ जाता है. अमाउंट ऑफ वाटर दे आर गेटिंग दैट इंक्रीजेस एंड दिस कोप अप विद द स्केर्सिटी ऑफ वाटर. आर यू गेटिंग? तो देखो वो जो इतना लंबा सा स्टेटमेंट लिखा है उसमें वो बस यही बताए कि भैया इसके पास क्यों लॉन्ग रूट्स है, तो कि इसलिए कि उसको पानी आसानी से मिल जाए. ये रूट्स सॉइल में डीप एंड डीप जाएंगी ताकि उन्हें पानी मिले. You can explain in your own words. Just you have to remember long roots. When I would be saying long roots, you would be able to recall कि हाँ क्यों है, तो कि डीप सॉइल में जाना है, वो प्लांट को मदद करेगी पानी वाला स्केर्सिटी ऑफ वाटर की डिफिकल्टी को कोप अप करने में, है ना. The thing is, long root is the one feature. What else these plants have? So many of the desert plants are succulent plants. They are called succulent plants. Now what is the feature of succulent plants? Which plants are referred as succulent? That means the plants which are having their stems as fleshy. ठीक है? Wherein case if we talk about the plants which are found around ourselves in moderate climates, so there the plants like we can take small shrubs and herbs like roses, okay, we can take tulsi, so that, or you can say basil, है ना. So this, yes, tulsi is also referred as basil. I should mention that. Yes, there are many plants, and if you see their stems, that is not fleshy. I think you have all been aware about aloe vera. ओके जब एलोवेरा का तुम वो स्टेम कट करते कितना जेली लाइक सब्सटेंस होता है, कुछ फ्लेशी अंदर होता है. ओके बट इन केस व्हेन आई कट द स्टेम ऑफ रोज, आई डू नॉट फाउंड एनी फ्लेशी सब्सटेंस. ओके सो दिस फ्लेशी स्टेम्स हेल्प टू रिटेन वाटर. ज्यादा वाटर लॉस ना हो, ये फ्लेशी स्टेम वो मदद करती है. अगेन दिस इज टू कोप विद द स्कैर्सिटी ऑफ वाटर. ओके नेक्स्ट, कवर्ड विद दीज स्टेम्स they are having the fleshy content. That means the stems are fleshy. Apart from this, they have also a thick covering of waxy layer. Now this again, जैसे कि मान लो if this is the area of stem, so there is a thick coating of wax on the surface of the stem, and this prevents evaporation of water. ठीक है, this prevents ultimately water loss. ठीक है, तो जो पानी स्टेम्स प्रोड्यूस कर रही है, तो ये वैक्स लेयर जो है वो स्टेम को कवर रख रही है ताकि मिनिमल वाटर लॉस हो, ज्यादा वाटर लॉस नहीं हो. अगेन so these two are again coping with the scarcity of water. First we discussed long roots. Second, we discuss succulent plants. That means the plants with fleshy stem, and the stem which is covered with thick waxy layer, we can say. Clear? Easy? Okay, moving down to next. Leaves are reduced to spines. So if you see, cactus have thorns or spines, and in case if we talk about you won't be observing leaves on the desert plants mostly. Okay, अगर होंगी तो बहुत कम होगी या तो नहीं होगी. So leaves के जगह अब आ गई spines. तो ये plants ने अपने आप को modify कैसे किया कि बोला हमारे पास leaves नहीं होगी, हमारे पास होंगे spines. ठीक है, तो spines are nothing but जो वो कांटे जैसे structure होते हैं. So suppose if you consider this as cactus, so there might be spines, and the one as a globe जैसा lobe जैसा मैंने बनाया है, that is nothing but it is stem. तो तुम सोचोगे कि हमें पता है, हमें क्या पता है कि leaves are the kitchen of the plant. जो खाना बनता है वो तो leaves में बनता है, लेकिन अब leaves नहीं होगे, अब spines है, तो क्या spines खाना बनाएंगे? No. Here the function of leaves is taken by stem. Stem जो है वो पूरे plant का खाना बनाएगा. Stem is green. If you observe carefully, desert plants have green stem, and this helps them
to make food of their own by the process called photosynthesis. ओके, तो यहाँ पे लीव्स नहीं होके स्पाइन्स है. अब वाई, इससे फायदा क्या हुआ? देखो, लीव्स जो होती हैं, लीव्स के ऊपर और नीचे, यानी लीव्स के सरफेस के ऊपर एंड सरफेस के नीचे क्या होते हैं? ओपनिंग्स होते हैं. एंड दीज ओपनिंग्स आर रेफर्ड एज स्टोमेटा. एंड दीज स्टोमेटा आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? फॉर एयर एक्सचेंज. ठीक है, तो मान लो अगर मैं ऐसा कुछ जस्ट अ मिनट, ऐसा कुछ ये स्टोमेटा होता है. ठीक है, तो ये क्या होता है? ये जो है ये ऐसे बंद होता है, खुलता है, बंद होता है, खुलता है. स्टोमेटा है ना. दीज ओपनिंग्स क्लोज ओपन. तो जब वो ओपन होता है फॉर एक्सचेंज ऑफ एयर, ठीक है, तब यहाँ पे जो वाटर कंटेंट होता है, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर कैसा है? हाई टेम्परेचर. तो हाई टेम्परेचर की वजह से इवेपोरेशन का रेट भी इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, इवेपोरेशन का रेट भी इंक्रीज हो जाएगा. व्हाई? बिकॉज जब तक एयर एक्सचेंज के लिए वो जितने समय के लिए ये ओपनिंग खुला रहता है, तब तक यहाँ का जो भी वाटर है जो सरफेस पे है उसका इवेपोरेशन हो जाता है. और यहाँ पे क्योंकि स्कैरसिटी ऑफ वाटर है, थोड़ा भी पानी बचाना है, उसे उड़ा नहीं देना है ना. सो हियर, सिंस टू प्रिवेंट दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपीरेशन, यानी द प्रोसेस ऑफ loss of water, the process of loss of water in the form of water vapor, okay, is known as transpiration. And this basically takes place in leaves. leaves में जो process है, जो water का loss है in the form of water vapor, that is known as transpiration. ठीक है, तो जब स्टोमेटा open and close होता है for the purpose of air exchange, at that time the transpiration also takes place. That means the evaporation of water also takes place. So to prevent this plant decided, okay, चलो leaves को ही निकाल दो. leaves निकल जाएगी तो स्टोमेटा निकल जाएगा. And these leaves are then modified into spines. Okay, now so these were the three features of plants which are found in desert habitats. What were those? They are having long roots, so that these roots penetrate deep inside the soil in search of water. Second, succulent plants. That means the plants with fleshy stem, and these kind of stem are always covered with thick waxy layer. And the third, we discussed that leaves are modified into spines. Okay, so you start with roots, you talk about stems, and you talk about leaves. Root, stem, leaf. Plant ka finish for desert habitat. Clear? Now, what about animals living in this habitat? How have they modified themselves so that they can survive in the conditions with high temperature and scarcity? That means lack of water. Water की कमी है जहाँ पे. So animals, they stay in burrows. For example, in case if we talk about rats, snakes, and some desert insects, they do not come out of their burrows. ठीक है, burrows होते हैं ना, सैंड में खड्डे खोदे हुए होते हैं, वहां अंदर जाके छुप जाएंगे. पूरी दोपहर वो बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि दोपहर में बहुत ज्यादा गर्मी होती है. And they do not want to lose their energy, कि गर्मी में आएंगे, ज्यादा काम भी नहीं कर पाएंगे और एनर्जी भी ज्यादा लूज होगी. So they prefer to stay in burrows. burrows में मस्त आराम करते हैं. And at night, when the atmosphere is much cooler as comparatively to day, okay, so at night they come out of their burrows for शिकार, है ना. ठीक है, तो प्रे को कैच करने के लिए वो रात को बाहर निकलते हैं. And during day, they try to live inside or stay inside burrows.
And the examples of these kinds of animals are rats and snakes. Apart from this, ये तो चलो ठीक है, rats, snakes, insects, the major animal of the desert habitat is camel, है ना? Now, how the camel has modified its body to live in this desert habitat? ये तो छोटे छोटे चलो manage कर देते हैं. But when in case if we talk about camels are such a large, such a tall, you can say, animal, है ना? Is having a very large body. So first and foremost, it is having a hump. तो बचपन से पता है कैमल के पास हम्प है. और ये हम्प क्यों होता है? तो बहुत सारे बच्चों को गलत फहमी होती है कि कैमल हैव हम्प टू स्टोर वाटर. वो हम्प में वाटर स्टोर करता है और जब जरूरत पड़ती है तो ये वाटर को वो यूज करता है. एट द टाइम व्हेन he is the camel is not getting sufficient water, enough water to drink, then he uses the stored water in hump. But this is a very wrong concept. Hump is not storing water, instead is storing fat, and this fat is acting as a source of food. Okay, so this hump of camel is helping it to store food, and at times when there is a lack of availability of food, then this fat is used by the camel, okay, to meet the requirements, to meet its hunger. Okay, next, camel has an ability to drink large quantity of water at the same time. ठीक है, एक ही टाइम पे. आई एम नॉट गिविंग यू द एग्जैक्ट वॉल्यूम ऑफ वाटर, बट अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज, एज पर आई रिमेम्बर, 10 to 12 liters कैन बी ड्रैंक बाय कैमल एट अ टाइम. एक ही समय में 10 से 12 लीटर पानी पी जाएगा, है ना? सो ऐसा क्यों कि डेजर्ट में बहुत कम बार ऐसा होता है कि पानी का सोर्स मिला, पानी कहीं पे मिला. सो कैमल उसका अच्छे से फायदा लेगा. जितना पानी पी सकता है वो ज्यादा से ज्यादा पानी पी सकता है ना? एट अ सेम टाइम, उसी समय पे. हम तो कैसे एक ग्लास पिया, ठीक है, चलो कोई चलो 2 ग्लास ले ले, बस, उससे ज्यादा नहीं. बट इट हैज द एबिलिटी टू ड्रिंक अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर एट द सेम टाइम. तो ये भी बहुत मदद करेगा, है ना? तो ये पानी फिर ज्यादा देर तक चलेगा ना, है ना? अगर आगे सोर्स नहीं है, then it's also okay. So because of this ability, it can live without water for a very long time. पर जब सोर्स मिलेगा तब अच्छा खासा पानी पिएगा. Okay, 2 points discussed regarding camel is hump and the ability to drink a large quantity of water at the same time. Third, excrete little water. So urine is very very in the form of drops. Okay, कोशिश करते हैं कि कम से कम बॉडी से वाटर रिलीज हो in the form of urine. If you see their feces, okay, or you can say feces or you can say dung, it is very dry. ठीक है, जितना से जितना ज्यादा पानी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी, वो कोशिश करेगी कि वो एब्जॉर्ब करे और एक्सक्रीट बहुत कम हो, क्योंकि पानी की कमी है तो पानी को बचाना है. तो बॉडी प्रोसेसेस भी, जैसे एक्सक्रीशन इज वन ऑफ द बॉडी प्रोसेस, है ना? सो ये क्या करेगा, ये कोशिश करेगा कि कम से कम पानी बॉडी के बाहर निकले. सो यूरिन एंड डंक, यूरिन excrete, when urine is excreted, it is in very little quantity, and when in case if we talk about dung, so it is very dry. Again, no sweat. So there is no sweating takes place in camel, है ना? गर्मी है तो पसीना तो बहुत ज्यादा आएगा, लेकिन इनको नहीं आता. बिकॉज सोचो, वो इतने हाई टेम्परेचर पे रहेंगे तो पसीना तो आता ही रहेगा, तो आधे से ज्यादा पानी तो पसीने में ही निकल जाएगा. एंड इधर तो कोशिश यही करनी है कि पानी कम से कम लॉस हो. सो नो स्वेट. ओके, नेक्स्ट, दे हैव लॉन्ग लेग्स. ओके, सो दिस लॉन्ग लेग्स help camel to move easily on sand. Apart from this long legs place the body, place their body away from the sand. तो long legs क्या मदद कर रहे हैं कि बॉडी को
वो गरम गरम सैंड से ऊपर रखे, ठीक है, तो ताकि बॉडी पे हीट ना आए. ओके, सैंड की गरम हीट है ना, गर्मी बॉडी को ना लगे, इसलिए देयर आर लॉन्ग लेग्स सो दैट द बॉडी इज केप्ट अवे फ्रॉम द हीट ऑफ सैंड. अपार्ट फ्रॉम दिस, the feet has large soles. So this large soles help them to move easy on soft sand. Clear? So this was all about camel. We discussed what? Okay, in case if we talk about animals, okay, we start with animals. We started with what? That stay in burrows. Which animals? Small animals like rats, snakes and insects. Okay, they prefer to live in burrows during day, or to stay in burrows during day, and at night they become active and they go for catching its prey. Now if we talk about the major animal, or the ship of desert, so that is camel. And what are the features of camel? It is having hump in which fat is stored. This fat is acting as a source of food. ठीक है, मतलब कि फूड इन द फॉर्म ऑफ फैट इज स्टोर्ड इन देयर हम्प. और जब कैमल को खाना नहीं मिलता, ठीक है, इन डिफिकल्ट सिचुएशंस, दिस फैट स्टोर्ड इनसाइड हम्प इज प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द कैमल. तो ये क्या है? मुसीबत के समय में काम आने वाली चीज है. अपार्ट फ्रॉम दिस, कैमल हैज द एबिलिटी टू ड्रिंक large quantity of water at the same time. Okay, apart from this, camel excrete very little water in the form of urine. Excrete means body waste, removing body waste. Apart from this, their dung is very dry and no sweating takes place. Okay, and the last point we discussed was having long legs, okay, which keep their body away from the heat of sand. Apart from this, what we discussed is long legs along with their feet is having large soles. ठीक है, जैसे हम पैरों में चप्पल पहनते हैं, they are having, or like ones which if we talk about humans wear shoes or footwear. Okay, similarly animals have soles. Okay, and these soles are large in case of camels, so that these large soles help camel to walk easily on sand. Clear? Okay, so these were the desert habitats. We started with plant. What are the features in plants? 3 features. Okay, I said roots, stems and leaves. You remember like this: roots, long roots, so that this help them to penetrate deep inside the soil. Okay, then we discussed about what? Stems. Stems, the succulent plants are having fleshy stems, and these stems are having thick waxy coat. उसके अलावा क्या डिस्कस किया? Third point was regarding leaves. Leaves of this plant are modified into stem. Am I correct? If I am correct, you may think, and you may try remind what did I say. I said leaves are modified into stem. Is this correct? Please make a focus on this point. Leaves are modified into spines to prevent loss of water. Okay, that to prevent transpiration. And what is transpiration? Loss of water in the form of water vapor. क्योंकि leaves के पास क्या होते हैं? Openings होते हैं. And what are these openings referred as? Stomata. तो stomata continuously क्या होते हैं? बंद खुलते हैं, बंद होते हैं, खुलते हैं. जब खुलते हैं, gases exchange तो होती है, साथ में जो surface पे water है उसका भी evaporation हो जाता है. क्यों evaporation होता है? देखो ना, temperature ज्यादा है, धूप का प्रकोप बहुत ज्यादा है ना. So to prevent this प्रकोप of धूप, what do this plants do? They modified leaves into spines. भाई लीव्स ही नहीं है तो स्टोमेटा की तो कोई बात ही नहीं है ना. लीव्स ही हटा दी, स्टोमेटा ही हट गए, है ना. तो क्या बचे? अब लीव्स की जगह इट इज मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स. एंड दिस स्पाइन्स आर नथिंग बट दे आर प्रोटेक्टिंग द कैक्टस. ओके, कैसे प्रोटेक्ट करेंगे?
कि कोई भी दूसरा एनिमल आए तो वो कैक्टस को न खाए. तो दिस इज वन ऑफ द फंक्शन ऑफ स्पाइन्स. Spines protects plants from get eaten away. Apart from this, who will do the function of photosynthesis? The stems. Clear? This was regarding plants. When I say animals, again, rats and snakes would like to live in burrows, or else we can say small animals would like to live in burrows during day, and at night they become active and come to catch their prey. Apart from this, when I talk about camels, okay, so camels are having certain features like having hump, wherein they do not store water, they store fat. Fat is acting as a source of food, okay. So when camel is not able to get food, they can rely on the fat stored in the hump. Apart from this, what is the next feature? You just remember like this. It starts with hump, okay, then it goes with ओके, हम्प के बाद अब आता है वाटर. जैसे फूड, वाटर, तो फूड का डिस्कस किया, फैट, अब आता है वाटर. सो इट ड्रिंक्स plenty of water at the same time. It has this ability. Apart from this, अब क्या हुआ, फूड और वाटर हो गया, अब आया एक्सक्रीशन. तो एक्सक्रीशन कैसा होता है, वेरी लिटिल इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, और डंक बहुत ड्राई होता है, स्वेटिंग नहीं होती. अल्टीमेटली बॉडी चाहती है कि कम से कम पानी बॉडी से बाहर रिलीज हो. Fourth, legs. So food, water, excretion or dung. Legs. When I say legs, they are having long legs, which keeps their body away from the heat of sun. Apart from this, what else we discussed is they are having larger soles. Okay, larger soles of feet. That means what? That these soles help this larger soles helps camel to walk smoothly or easily on the soft sand. Okay, now this was about desert habitat. When I say about water habitats, or you can say aquatic habitats, so how animals manage there. So the basic functions in this habitat is breathing in water. तो उसके लिए उनको मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा ना. जैसे जो लैंड पे एनिमल्स रहते हैं, दे बेसिकली ब्रीथ थ्रू. इफ वी स्पेसिफिकली टॉक अबाउट मैमल्स, लाइक एनिमल्स लाइक अस ह्यूमंस, दे ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स. दे टेक द हेल्प ऑफ लंग्स टू ब्रीथ एयर. बट इन केस इफ आई टॉक अबाउट कैमल्स, आई मीन देखो कैमल्स अभी तक डेजर्ट में, अभी हम किस में आए हैं, वाटर वाला है ना. सो व्हेन आई से वाटर हैबिटाट्स है ना, या एक्वेटिक हैबिटाट्स, तो वहां पे एनिमल्स आर हैविंग गिल्स इंस्टेड ऑफ लंग्स. ओके, सो दिस गिल्स विल हेल्प देम टू ब्रीथ इन वाटर. ओके, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस. व्हाट आर एक्सेप्शंस? कि मैं ऐसा बोल रही हूँ कि जनरली ऐसा होता है, जनरली एक्वेटिक एनिमल्स और वाटर एनिमल्स दे ब्रीथ थ्रू गिल्स. लेकिन ऐसे भी एनिमल्स हैं जो गिल्स के साथ ब्रीथ नहीं करते. They use a different phenomena to breathe. Okay, what is that we would be discussing in the next part. But what I want to say is कि मैं ऐसा बोल रही हूँ कि water animals breathe through gills. This is a general formula कि भाई ज्यादा से ज्यादा animals, not सारे animals, okay, ज्यादा से ज्यादा animals जो aquatic है, that live in aquatic habitat, they breathe through gills. चलो, फिर उसके अलावा व्हाट इज द कॉमन फीचर्स यू वुड बी सीइंग कि भाई पानी में कैसे ब्रीथ करेंगे, वो एक फेनोमेना हो गया. ठीक है, फिर पानी में हाउ दे आर मूविंग एंड कैचिंग द प्रे. इन केस इफ यू टॉक अबाउट एनिमल्स, ओके, हाउ दे आर मेकिंग देम फ्लोट इन वाटर, हाउ दे आर मेकिंग देम स्टेबल इन वाटर. ठीक है, ऐसे ऐसे बह नहीं जाए. इन केस ऑफ प्लांट्स, सो लेट अस डिस्कस. When I say plants, what are the basic features they have modified in them so that they can live in this habitat? So, they have reduced roots, just opposite of desert. इनके आसपास तो पानी ही पानी होता है. So, these roots won't be absorbing water. यहाँ पे roots क्या करती है? Long roots, absorb water. Here they have reduced roots मतलब short roots. शॉर्ट रूट्स मतलब क्या कि ये रूट्स जो है, ये क्योंकि इसके आसपास तो पानी ही पानी है, तो ये रूट्स एंकरेज में मदद करेगी. ठीक है,
वहां उस जगह पे स्टेबल रहे वो प्लांट, एक जगह पे खड़ा रहे वो प्लांट, खड़ा मतलब फ्लोट करता रहे वो प्लांट, फॉर दैट रूट्स इज रिक्वायर्ड. ठीक है. सो टू stand upright in water or to float upright in the water, these plants, these aquatic plants have reduced roots, short roots. Apart from this, stems, तो roots की बात कर ली, अब stems की बात करते हैं. Stems are long and narrow. ठीक है. long तो समझते हैं कि ये long हो गया, और narrow पतली. तो stems जो है they are long and narrow as in case of वाटर लिली. और दूसरा पॉइंट भी है स्टेम्स का, क्या? दे हैव एयर स्पेसेस. नाउ यू नो लॉन्ग और नैरो और एयर स्पेसेस है स्टेम्स के पास. क्यों है? सो एयर स्पेसेस इन द स्टेम में अगर एयर स्पेसेस आती है तो वो स्टेम को हल्का बनाती है और वो आसानी से फ्लोट कर सकती है. लॉन्ग और नैरो इसलिए है ताकि जब वाटर करंट्स आते हैं, पानी का बहाव आता है जोर जोर से, तो दे शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ कि पानी का बहाव जोर से भी आए तो दे डू नॉट ब्रेक या उनको कोई डैमेज ना हो. इसलिए दे आर सो फ्लेक्सिबल इसलिए बिकॉज ऑफ लॉन्ग एंड नैरो स्टेम्स. स्टेम्स में एयर स्पेसेस है सो दैट दे रिमेन फ्लोटिंग ऑन वाटर. ठीक है. फिर ऐसा नहीं मतलब प्लांट को रखा और प्लांट पानी में डूब गया, है ना. सो टू प्रिवेंट दिस सिंकिंग ऑफ प्लांट्स एंड टू मेक द प्लांट कंटिन्यूअस इन अ फ्लो मोमेंटम, वी कैन से दैट दीज स्टेम्स हैव एयर स्पेसेस. ओके. अपार्ट फ्रॉम दिस फ्लोटिंग लीव्स. रूट्स की बात की, स्टेम्स की बात की, अब लीव्स की बात कर रहे हैं. लीव्स जो होती हैं दो तरह की होती हैं. एक होता है फ्लोटिंग लीव्स और एक होता है सबमर्ज्ड लीव्स. व्हेन आई से फ्लोटिंग लीव्स, तो ये लीव्स लार्ज और फ्लैट होती हैं. क्यों? तो फिर से वही लार्ज और फ्लैट इसलिए है ताकि वो आसानी से फ्लोट कर सके. अपर सरफेस, फ्लोटिंग लीव्स के अपर सरफेस पे स्टोमेटा होते हैं. ये स्टोमेटा एयर एक्सचेंज में मदद करेंगे. ठीक है. अपर सरफेस पे ही क्यों स्टोमेटा होते हैं? क्योंकि नीचे के सरफेस पे तो पानी है ना, तो स्टोमेटा एयर एक्सचेंज कैसे करेगा? स्टोमेटा तो हवा से एयर एक्सचेंज करेगा ना. सो हवा से एयर एक्सचेंज करने के लिए फ्लोटिंग लीव्स के अपर सरफेस पे ही स्टोमेटा होती है, क्योंकि नीचे के सरफेस पे क्या होता है? पानी होता है. दीज लीव्स आर लार्ज एंड फ्लैट ताकि आसानी से फ्लोट कर सके. अपर सरफेस पे वैक्सी लेयर होती है, वैक्स की लेयर होती है. क्यों? टू मेक इट वाटर प्रूफ. कि भाई चलो वो उसका नीचे का पोर्शन ही पानी के कांटेक्ट में है, लेकिन चांसेस है ना कि ऊपर वाले सरफेस पे भी पानी आ जाए, है ना. पानी स्प्लैश हो सकता है, वाटर करंट्स की वजह से पानी आ सकता है ना. तो उस अपर सरफेस इज हैविंग वैक्स. जैसे ही वैक्स लगा दोगे तो इट इज वाटर प्रूफ, वो वाटर प्रूफ बन जाएगा, है ना. तो वहां पे पानी नहीं आएगा. ये तो हुई फ्लोटिंग लीव्स की बात. When I say submerged leaves, देखिए this case is also found in water lily, है ना. Water lily के पास floating leaves है which are large and flat. Upper surface is having stomata and a layer of wax. When I say submerged leaves are long and narrow. तुम पानी में अंदर जाते हो तो तुम्हें प्लांट्स कभी देखे होंगे पानी के अंदर, तो उसमें कैसे होती है? स्टेम्स होती है लॉन्ग एंड नैरो, ऐसे ग्रास जैसी, है ना. ग्रास जैसी लेकिन बड़ी, है ना. वो बड़ा प्लांट होता है तो वो ऐसे मूव करते हैं. क्यों लॉन्ग एंड नैरो है? टू इजीली विथस्टैंड मतलब कि मतलब अगर वाटर का बहाव आए, पानी का बहुत जोर से बहाव आए तो भी उनको डैमेज ना हो, है ना. वो उसे कोप अप कर सके, उसे विथस्टैंड कर सके. ठीक है. इसलिए ये स्टेम्स जो होती है सबमर्ज्ड लीव्स जो होती है, सबमर्ज्ड लीव्स दे आर आल्सो लॉन्ग एंड नैरो एज स्टेम्स. ठीक है. तो दिस इज आल्सो हियर द एग्जांपल इज टेप ग्रास. ओके. सो टेप ग्रास इज हैविंग submerged leaves. Okay. And water lily is having stems which are long and narrow. Tape grass is having submerged leaves which are long and narrow. This was all about plants. Okay. So we started with what? Roots. How the roots are in case of aquatic habitat or in case of aquatic plants, or else we can say water plants. Okay.
तो ऐसे प्लांट्स विच आर लिविंग इन एक्वेटिक हैबिटेट, दे आर हैविंग रिड्यूस्ड रूट्स। ये रूट सिर्फ प्लांट को खड़े रहने में मदद करेगी या पानी में फ्लोट होने में मदद करेगी, ठीक है। दीज आर नॉट इन्वॉल्व इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। सो रिड्यूस्ड रूट, रिड्यूस मतलब शॉर्ट रूट्स होती है। चलो रूट्स के बारे में अब हम बात करेंगे स्टेम्स के बारे में। जब मैं स्टेम्स बोलती हूँ तो स्टेम्स जो होती है वो लॉन्ग और नैरो होती है, ठीक है। तो अगर पानी का बहाव आए टू विथस्टैंड वाटर करंट्स, the stems are long and narrow. Example is water lily. Again, stems have also air spaces. तो air spaces होती हैं, ठीक है। मान लो ये stem है तो इसके अंदर ऐसे air spaces होंगे, यहाँ पे हवा भरी हुई होगी, which makes the stem feel light. Light होगा तो आसानी से, हल्का होगा stem तो आसानी से float कर सकेगा ना। So air spaces are responsible for this. So again, water lily में ऐसा होगा। Now then again leaves, okay, floating leaves, submerged leaves. Floating leaves जो होती है वो large और flat होती है, again for floating purpose. Upper surface पे stomata होते हैं और wax की layer होती है to make it waterproof, ठीक है। जब मैं submerged leaves की बात करती हूँ, ठीक है, तो जो floating leaves अभी हमने describe किया, that is example for water lily. बट अगर सबमर्ज लीव्स में कह रही हूँ वो होते हैं लॉन्ग एंड नैरो। सबमर्ज्ड मतलब क्या, पानी के अंदर, सबमर्ज्ड पानी के अंदर, है ना। तो ये लीव्स लॉन्ग एंड नैरो होती है एंड द एग्जांपल इज टेप ग्रास, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्लांट्स, ओके। नाउ व्हेन आई से एनिमल्स, तो एनिमल्स जो इक्वेटिक हैबिटेट में मिलते हैं उनके पास स्ट्रीमलाइन्ड बॉडी होती है। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय स्ट्रीमलाइन्ड इज कि ब्रॉड इन फ्रंट एंड नैरो एट बैक, ठीक है। तो ये समथिंग लाइक फिश जैसा लग रहा है ना। तो ये क्या है, ऐसा शेप जो आगे से ब्रॉड हो और पीछे से नैरो हो, आगे से ब्रॉड हो, वाइड हो और पीछे जाते जाते इट बिकम्स नैरो, पतला होता जाता है। सो ऐसा शेप जो है ना वो एनिमल्स को पानी में मूव करने में मदद करेगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर बॉडी इज कवर्ड विथ स्केल्स एंड म्यूकस। तो म्यूकस जैसे प्लांट्स के पास वैक्स होता है, ऐसे एनिमल्स के पास होता है म्यूकस। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय म्यूकस, वो भी ऐसा कुछ लेयर होता है जो वाटर का फ्रिक्शन से बचाता है। वाटर करंट्स आते हैं, ठीक है, तो वो वाटर से बचाएगा स्केल्स और म्यूकस वो एनिमल को, ठीक है, और वो आसानी से पानी में रह सके इसलिए। देन दे हैव गिल्स टू ब्रीथ एंड दे हैव फ्लैट फिन्स एंड टेल। अभी फ्लैट फिन्स और जो टेल्स होती है बॉडी में वो क्या मदद करती है, तो 3 फंक्शन है। फर्स्ट, हेल्प देम टू मूव फास्टर, फास्ट मूव करना है। तो स्ट्रीमलाइन बॉडी तो है जो वाटर को कट करके फास्ट आगे बढ़ सकते, लेकिन तुम देखो स्विमिंग में तुम अपना हाथ भी यूज करते हो, जितना फास्ट हाथ चलाओगे उतना जल्दी स्विम कर पाओगे। सिमिलरली जितनी फ्लैट फिन्स और टेल्स हैं that would be helping them to move faster in water. Apart from this, change direction, direction change करना है तो specifically tails वो use करते हैं to change the direction and make body remain balanced in water. Water में balance बना के रखने के लिए fins and tails are required. Apart from this, have air bladder. ठीक है, तो इनके बॉडी में, एक्वेटिक एनिमल्स की बॉडी में एयर ब्लैडर होता है which helps their body to remain in a floating condition. आराम से वो फ्लोट कर सके। अगर हमारे जैसा भारी वजन होगा तो सिंक हो जाएंगे, है ना। So this air bladder helps them to float in water and to easily move. Okay, so these were the basic features, or you can say adaptations of aquatic animals, wherein we talked about streamlined shape, gills, body is covered with mucus and scales, ठीक है, scales और mucus से covered है। apart from this have flat fins and tails। ये काम आएगा, ये याद रखना कि क्या फंक्शन है aquatic animals में flat fins और tails का। तो they help in change direction, they help them to move faster and to make their body remain balanced in water. These are the 3
reasons why they are having flat tails and flat fins and tails, obviously. Again, have air bladder. Okay, so this make their body remain in floating condition inside water. Okay, now if I talk about another some few points, जैसे कि squids and octopuses, I mean octopus. तो octopus और squids को तुम देखोगे ना, so they do not have streamlined body, है ना, जैसे आगे से broad पीछे से narrow, ऐसा इनके पास shape नहीं होता. तो ये ज्यादातर क्या करते हैं कि ये सी बेड, यानी जो सी बेड जहाँ पे ओशन खत्म होने आता है, डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन और सी बेड है ना, वहां पे ये रहते हैं नीचे. ठीक है, और अगर मूव करना है तो वो अपनी बॉडी को स्ट्रीमलाइंड जैसा बनाएंगे. तो टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छा सा फिगर दिया है ऑक्टोपस का, कैसे उसने अपनी बॉडी को स्ट्रीमलाइंड शेप में मॉडिफाई किया, या मॉडिफाई नहीं कह सकते, कन्वर्ट किया थोड़ी देर के लिए, ताकि वो फास्टर मूव कर सके, फास्ट मूव कर सके वाटर में, है ना. सो उनके पास स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप तो नहीं है, पर जब उन्हें मूव करना होता है सो दे मेक देयर बॉडी इनटू स्ट्रीमलाइन शेप. दूसरा, वो सी बेड के आसपास ही दे स्टे देयर ओनली, और आसपास अगर प्रे आता है तो वो कैच करेंगे. इनकेस अगर नहीं आता है देन दे वुड बी मूविंग विथ मेकिंग देयर बॉडी इन अ स्ट्रीमलाइंड शेप. Okay, next, dolphins and whales, they do not have gills, as I said, है ना, कि मैं बोल रही हूँ कि aquatic animals के पास gills है to breathe. That means most of the animals, there are certain aquatic animals which do not have gills for breathing. In that case, they have certain blowholes. These blowholes are present on the upper side of the head of dolphins or whales. तो ये क्या होती है, ये बार बार सरफेस पे आती है, वो ब्लो होल से दे टेक और ब्रीथ एयर एंड देन दे अगेन सबमर्ज इनटू वाटर, और वाटर में ये सेवरल मिनट्स ब्रीथ करे बिना रह सकती है. कौन? डॉल्फिन्स एंड व्हेल्स. ओके, सो इंस्टेड ऑफ गिल्स दे ब्रीथ थ्रू ब्लो होल्स, और ये ब्लो होल्स हेड के ऊपर होते, तो वो बार बार सरफेस पे आती है, सांस लेती है, फिर अंदर जाती है, कुछ मिनट अंदर फ्लोट करती है, फिर बाहर आती है, फिर सांस लेती है with the help of this blowholes. Okay, apart from this, frogs. So frog is such an organism which live both on land and water. So such kind of animals which live on both land and water are known as amphibians. है ना, जो पानी में भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं, उनको हम बोलते हैं एम्फीबियंस. ओके, तो ये एम्फीबियंस है. अब तुम फ्रॉग में देखो, उनके पास स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स होते हैं, पीछे के जो लेग्स होते हैं, हाइंड लेग्स होते हैं, दे आर स्ट्रॉन्ग है. दैट मींस दे हेल्प इन लीपिंग एंड कैच देयर प्रे. ठीक है, और जो वेब्ड फीट है वो स्विम करने में मदद करते हैं. ठीक है, मतलब बाहर जब लैंड पे होंगे तो स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स जो है वो काम आएंगे प्रे को कैच करने में. बट व्हेन इन केस इफ आई टॉक अबाउट वाटर में है, जब उनको स्विम करना है तो वेब्ड फीट के बीच में इफ आई कंसिडर दिस काइंड ऑफ फीट, उनका फीट ऐसा कुछ है, तो यहाँ पे बीच में कुछ ऐसा मसल जैसा होगा, है ना. ठीक है, यहाँ पे ऐसे बीच में कुछ होता है, दैट इज नथिंग बट वेब्ड फीट ना. तो ये फीट जो है, ऐसा कुछ फीट स्विम करने में मदद करेगा. ठीक है, so this were different adaptations for desert habitats and water habitats. So in the next class we would be continuing with the adaptations of few more habitats.